पुनः निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे इनॉग्रेशन सेशन के मुख्य अतिथि ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस BS चौहान जी, फॉर्मर चेयरमैन लॉ कमीशन के लिए विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर VK शुक्ला सर, Buena Vista यूनिवर्सिटी USA एंड Fulbright-Nehru स्कॉलर हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत बहुत हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी ध्येय के साथ अब मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा वेद ब्रह्म विद्यालय के बटुक से कि वो हमारे बीच आए और मंगलाचरण करें। सभी मैं बटुक जनों से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और मंगलाचरण का गायन करें। मुझे दीप प्रज्वलन की परंपरा स्वयं में इस बात का द्योतक है कि हमें अपने अंतस में अंधकार को बाहर निकालकर प्रकाश के मार्ग पर चलना है। इसी कड़ी में मैं फिर से निवेदन करूंगा सभी बटुकों से कि कृपया मंगल हरे ओम दशरवा स्वस्ति नः पूर्वा ब्रह्मवेदा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेमादशवा यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले विराट परीक्षा बीके हरिश्चंद्र के यहीं पर ये सत्य शिक्षा राजधानी राजधानी
राजधानी राजधानी मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही भले भोले बुद्धि शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराएं करुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना करे ये वाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये धर्मवीरों की राजधानी। केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से कृपया माल्यार्पण के द्वारा हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत। Department of Veda, Faculty of SVDV, BHU, for presentation of theme and welcoming remarks. मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रख्यात शल्य चिकित्सक प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति जस्टिस वीएस चौहान जी, जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगिया के फूल हैं। आपका शिक्षा इसी विश्वविद्यालय से हुई है और आप सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस रहे, साथ ही विधि आयोग के आप पूर्व चेयरमैन रहे। हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि प्रोफेसर शांति श्री पंडित जी, जो कुलपति माननीय कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, प्रोफेसर स्वाति भट्टाचार्य जी, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर अनूप कुमार जी, विधि संकाय तथा वैदिक विज्ञान केंद्र की जो कोर्स चलता है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे बीच जो विशिष्ट अभ्यागत यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर बीपी वर्मा जी, डॉक्टर शंकरन जी, झारखंड न्यायालय के श्रीमान एस.एन. पाठक जी, और हमारे इस कार्यक्रम के में शाश्वत अतिथि के रूप में, कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं मंच पर नहीं, मैं आज सम्मुख बैठूंगा। हमारे बीच
सदगुरु स्वामी माधवप्रियदास स्वामी जी महाराज, जो गुरुकुल विश्वविद्या पीठम गुजरात से आप पधारे हैं और आप भी काशी के पांडित्य परंपरा से जुड़े। विभूषण ओझा जी व्याकरण विभाग, काशी विश्वनाथ व्यास परिषद के सदस्य, प्रोफेसर स्वामी सर पुणे से धर्मशास्त्र के राष्ट्रीय स्तर में विश्व स्तर के विद्वान, प्रोफेसर रामनाथ झा जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, श्रीलंका से हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर झा जी सुंदर ने। यहाँ पर अनेक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हैं। भारत के 20 प्रांतों से इसमें प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं और विदेश के 9 प्रतिभागी इसमें उपस्थित हैं। सबका मैं सम्मिलित रूप से हृदय के गहराइयों से आपका इस प्रांगण में वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से काशी हिंदू वैदिक विधि शास्त्र समकालीन विश्व पर उसका प्रभाव मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस केंद्र की स्थापना महामना की चिंतन परंपरा प्रतीचि और प्राची की मेल की अवधारणा पर ही आधारित रही है, क्योंकि महामना की यह संकल्पना थी कि प्रतीचि और प्राची का मेल के बिना भारत अपने मूल अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए एक तरफ ज्यादा नहीं बोल रहे उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय आज से 100 वर्ष पूर्व 1916 की बात है। कुछ नहीं करना। और दूसरी तरफ उन्होंने बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और उनका यह था कि प्रतीचि और प्राची का दोनों का समन्वय के साथ ज्ञान का जो उत्स है वह प्रादुर्भूत हो और उससे राष्ट्र का निर्माण हो। स्वतंत्र भारत जब हमारा बनेगा तो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार उसका डेवलपमेंट, उसकी संरचना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 1918 में स्थापित किया गया। इस केंद्र की संकल्पना है वेद, वेदांग, उपवेदों में जो अप्लाइड साइंस है, प्रयोगधर्मी जो विज्ञान का पक्ष है, उस पर रिसर्च बेस्ड प्रयोगशाला आधारित कार्य हो। लाखों जो पांडुलिपियां यत्र तत्र देश विदेशों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का बिखरी हुई हैं, उन पर प्रकाशन हो, उस पर शोध हो और पठन पाठन की परंपरा विकसित हो। उसी क्रम में यहाँ पर 3 पाठ्यक्रम वैदिक साइंस, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक जुरिस्प्रूडेंस। वैदिक जुरिस्प्रूडेंस में भी यह चर्चा है कि आप प्रयोगधर्मी विज्ञान के क्रम में या जुरिस्प्रूडेंस का विषय कैसे आप ला रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब तक हमारी विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक यह हमारा संपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना भी निराधार है। तो विवेक बुद्धि हमारी सात्विक रहे और भारतीय चिंतन परंपरा से पोषित रहे, इसलिए वैदिक जुरिस्प्रूडेंस की परम आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। वेदो किलो धर्म मूलम वेदात सर्वम प्रसिद्ध्यति इत्यादि वाक्यों से यह स्पष्ट है कि वेद जो विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। हम लोगों की अवधारणा में तो वेद नित्य शाश्वत ज्ञान राशि है, उसमें उसी से सारे भारतीय चिंतन परंपरा नहीं पूरे विश्व के चिंतन परंपरा का प्रादुर्भाव इसी वैदिक साहित्यों से हमें प्राप्त होता है। उसमें जो चतुर्दश विद्या है, 14 विद्या के स्थान माने गए हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्रांग मिश्रता विद्या स्थानानि एतत् चतुर्दश, मान विद्या के ये चतुर्दश स्थान बताए गए। उसी प्रकार से 4 उपवेद बताए गए, तो 14 और 4 18। फिर बाद में तो उन वेद 4 वेद और 6 वेदांगों में एक कल्प वेदांग आता है। कल्प वेदांग के अंतर्गत 4 सूत्र ग्रंथ आते हैं। उसमें तीसरा जो सूत्र ग्रंथ है वो धर्म सूत्र है। तो उस धर्म सूत्र के क्रम से
ही ये सारे वैदिक जुरिस्प्रूडेंस का विकास, एक तरह से विकास की यात्रा यद्यपि वैदिक साहित्यों में भी है, लेकिन वैदिक साहित्यों में जो आचार व्यवहार और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संवैधानिक नीतियों का बीज एक तरह से देखा जाए तो वो धर्मसूत्रों से हमें प्राप्त होता है। और उस क्रम में अगर देखा जाए तो ये जो 14 जो विद्या, 4 उपवेद, अष्टादश विद्या के स्थानक कहे गए, इसके अलावा 4 लोक की विद्याएं बताई गई, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, नीतिश्च। ये विद्या हेत चतुस्तु लोकस्य स्थित हेतव, ये 4 जो है लोक विद्या को जानने के लिए आन्वीक्षिकी, त्रयी, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनके द्वारा हम समग्र इस व्यवहारिक वैदिक जुरिस्प्रूडेंस को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन वैदिक जुरिस्प्रूडेंस जो वर्तमान की जो वैदिक जुरिस्प्रूडेंस की जो व्यवस्था है वह सिर्फ एक कुछ विषयों को लेकर के ही आधारित है, जबकि हमारा जो वैदिक विधि का जो पक्ष है, वैसे देखें तो वैदिक विधि का जो विषय है वो हमारे यहाँ मीमांसा में वो यज्ञ पर आधारित है, यज्ञ के विधियों के संदर्भ में विमर्श करता है। लेकिन जो लोक के क्रम में जब हम चिंतन करते हैं तो उस लोक के जो विद्या का जो के क्रम में अगर हम चिंतन करें तो 4-5 प्रमुख जो है बिंदु उभर के आते हैं। वह आता है ब्रह्मांड की नीति, ब्रह्मांड का जो प्रबंधन, यह हमारे वैदिक जुरिस्प्रूडेंस के क्रम में पहला दृष्टि। उसमें भी ब्रह्मांड की नीति का क्या है तो कहा कि ऋत मन सत्य, ऋतंच सत्यंच विद्धात् तपसोऽध्य जायत ततो रात्रे जायत। तो उसमें जो ऋत क्या है, ऋत जो है वह सत्य का सूक्ष्म स्वरूप है। ऋत जो है वह सत्य का सूक्ष्म स्वरूप है जो अंतःकरण में स्थित रहता है, लेकिन जब मूर्त रूप लेता है तो वह सत्य होता है, और जब वह कर्तव्य रूप में आता है तो वो तप हो जाता है। तो ऋत, सत्य और तप। इसी प्रकार से समाज का जो क्या नीति है, समाज की विधि क्या है तो कहा कि आचार जो है समाज का। इसी प्रकार से राष्ट्र की विधि क्या है तो कहा कि राष्ट्र की विधि जो है कहा कि आचार परंपरा। राष्ट्र की विधि जो है, राष्ट्र का विधि मतलब पूरे संविधान, जिसको हम संविधान के रूप में हम देखते हैं। उसी प्रकार से परिवार की विधि देशाचार, कुलाचार, अपनी परंपरा। व्यक्तिगत विधि जिसको हम स्वयं अनुपालन करते हैं वो है सदाचार। इसी प्रकार से वैदिक दृष्टि से जब हम आचार की विधि के विषय में जब चिंतन करते हैं तो महाभारत में इसका उल्लेख आता है। उसको 7 भागों में विभक्त किया गया है। स्मरणातीत प्राचीनता, निर्दिष्टता का तात्पर्य है एक विषय में आचारनिष्ठ होना। शांतिपूर्ण उपभोग का तात्पर्य है तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य शुद्धनम। राष्ट्रीय विधि का अविरोध। 5वां है अतीत का भविष्य के साथ जोड़ना। महर्षि कात्यायन ने इस पर बहुत बल दिया है। व्यक्तिगत विधि का विरोध न करना, पर्सनल लॉ का जो विरोध न करना। फिर कहा कि निरंतरता, अविच्छिन्नता। तो इस प्रकार से इन सभी का जो निर्णय का जो आधार होता है वो देश, काल, पात्र, स्थिति और रुचि, ये 5 इसके भी बिंदु हैं। इनके आधार पर हम इसको करते हैं। ऐसे यह विषय बहुत व्यापक है। अगर इस पर हम यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, इस पर मंथन करेंगे और उस मंथन से हमें अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः समवेत रूप से मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच को अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे समागत, जितने भी हमारे यहाँ विद्वत गण, अतिथि गण, प्रतिभागी गण, अध्येता गण
और हमारे मीडिया से जुड़े हुए जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका सम्मिलित रूप से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय तो भारत, जय तो संस्कृत। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, एक एक दिन का उठाना पड़ता है। ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर को भी धन्यवाद कि आपने इस परिकल्पना को मूर्त रूप दिया। सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। Now, ladies and gentlemen, we rarely get this kind of an opportunity to listen to the word of great personality like Dr. Swasti Bhattacharyya, Professor Emeritus, Philosophy and Religion, Buena, Vista University, US, and Fulbright-Nehru Scholar, Harvard Divinity School, Women's Study and Religion Program. Visiting professor and ma'am, during her last year, she served as Director of Gender and Women's Study as well as Study Abroad Program. She has taught courses in various world religious, applied ethics, and non-violence, peace and justice. Her latest publication, SVDV, Hindu Perspective on the Treatment of High-Risk Newborn Infant in Religion and Ethics in the Neonatal Intensive Care Unit, and her book, Magical Clothing, Modern Technology, combine her experience as a registered nurse with the expertise in the ethics and the study of religion. Dr. Bhattacharya also served on the American Academy of Religions Committee on the status of religion and ethics, humanities in profession, and on the road to the Peace and Justice Association. So let us have the privilege of listening to Madam. It is my honor now to invite Madam Swasti Bhattacharya. Good morning. I apologize, I cannot speak in Hindi. It would be like a 2-year-old. So thank you very much for this honor. Thank you, Dr. Karma, for putting this together. And I look forward to learning more about Vedic jurisprudence. That is not my area of expertise, but I have been asked to come and say a few words about the role of religion, morality, and ethics in public life. And I really think that's something that all of us should be very concerned about. And it's something that I've put a lot of time into and thinking about in my career as a bioethicist and as an applied ethicist. So let me begin with emphasizing that religious studies, in the field of religious studies, there is not an agreed upon definition of religion. So think about what that means, right? If all the scholars that come together in the world cannot say that religion is X, that means it's really complex. And over the years, I have been collecting definitions of religion. And right now I have a list that's about 64 definitions. And it's by no means comprehensive, right? So there's a lot of ways we can look at that. And if it's complicated, well, life is complicated, right? I'm like I said, an applied ethicist. And that means I want to take what I learn and what I learn in philosophy and theology and apply it to how we live in this world. And you all know life doesn't fit into nice little neat categories, right? It's messy. So when we talk about religion, which is part of life, it's going to be messy. A lot of times people choose to use the term spirituality rather than religion. And when we do that in the United States, yeah, this is kind of, how about if I do this? There. Now I can see you. Okay. In the United States, you often hear people saying, I'm spiritual, but I'm not religious. And if we think about what that means, a lot of times that means they're kind of putting aside or even outright rejecting institutionalized, formalized religion. And that can happen, right? And that's often a thing that happens. But then that doesn't mean they're not concerned about the larger questions in life, the meaning and the purpose, and how they're supposed to live their life. And oftentimes spirituality is where those questions come in. And they fall under that, where it's dealing with that transcendent realm, which sometimes we'll refer to as God or gods, or that metaphysical,
right? That which is beyond the physical reality that we see and we engage. And others talk about it as something within, right? The Atman, the soul that is within. And when I teach my students in the States, we talk about the jiva. And in Jainism, it's an actual thing, right? It's a physical thing. And I said, but if you dissect a human being, are you going to see a jiva? You won't, right? So it's still a metaphysical idea. This really gets at the heart of how I define religion. Religion are human attempts to understand, to grapple with, and to engage that transcendent, metaphysical inner spirit or inner idea or inner existence. Sometimes these attempts at understanding and engaging get institutionalized and become formal religious traditions, and other times they don't. Again, that's why it gets so complicated when we talk about religion. In their institutionalized forms, religions can be a powerful tool. And think about how powerful and how inspirational different religious traditions can be for people. It can be a powerful tool for good or for ill, to bring about freedom or oppression. It all depends on how we choose to implement this tool that we call religion. Consider Reverend Desmond Tutu. He's the bishop, the Anglican bishop in South Africa. And I'm sure all of you have heard about him. He's a delightful human being. And I was in graduate school and had the privilege of listening to him address us. And he was talking about the equality of all people. And he starts to tell a story. And if you've never heard him tell stories, go on to Google and Google Desmond Tutu and just watch. He's got this infectious joy when he tells these stories. And think about the context out of which he's coming. Right? He's a black South African, and he has all this joy that he's sharing in spite of all the experiences that he's had. So in the talk that I heard him when I was in grad school, he was talking about the equality of all people. And he tells this story of this African woman and her son. And they're walking down the road, and they get to this checkpoint. And there's a white South African guard there. And he looks at the woman, and he spits in her face. And he says, "You're a dog." And she looks at him, and she holds her head up high, and holds her Bible, and says, "I am a child of the living God." And she walks on, knowing who she is. Consider also Timothy McVeigh. Some of you may remember in the mid-90s, he was in the United States, he was a white nationalist. He too was motivated by his religious convictions. However, he drove a truck down into downtown Oklahoma, and he blew up a federal building, killing over 168 people, some of whom were kids, because there was a daycare center in that building. And I think over 680 people were injured. Both of these people, the black South African woman and Timothy McVeigh, found a sense of identity in their religious traditions. However, they used it in very, very different ways. Remember, religion is a tool that people use to try and explain the world around them and their place in it. It can be utilized to bring about anything between peace and war, freedom and oppression, and it all depends, again, upon how we choose to use it. Notice I'm focusing on this idea of our choice. As an applied ethicist, I think it's very important that we take responsibility and be mindful of the choices we make as we live in this world. My focus and my concern as an applied ethicist who examines ethical issues from multiple religious perspectives and philosophical perspectives is to examine how these systems of belief are being used by people. Now, I'll often have students say, "Well, I don't believe in God." And it's like, that's fine. You don't have to believe in anything. But people who do some powerful things. So understanding where they're coming from is really, really important. And to figure out, people use religious traditions, philosophy, spirituality, to figure out who they are,
who they want to be, and how they want to live in this world. And those three questions, I challenge all of us, and I say myself included, to think about that on a daily basis. I'm continually saying, who is it that I want to be? How am I responding to a situation that's frustrating? I can yell and scream, or I can respond in a more gentle way, but that's a choice that I make, right? And if I mess up, do I just give up? No, because life keeps going on, right? So okay, I messed up on that, let me see what I can do next. Religious beliefs, I think that's important to understand how we do that, to figure out who we are, who we want to be, and how we want to live in this world. Now ethics, so I'm an applied ethicist, it's all about decisions. It's about the decision itself and the process by which we make decisions. And different religious traditions can give you different ideas. You can come to the same answer, but you might get there on different paths. And the pathway itself is really, really important. So for some people, their decisions are strongly influenced by their association with that institutionalized formal religious tradition. For others, it's not. For some, it's that sense of spirituality or philosophy or other elements where they get that idea of how they should live and who they want to be. Again, the key thing is to be critically mindful of how we're making choices. So my answer to the question of what is the role of religion, morality, and ethics in public life is that they are central. They are going to be the determining factors for the type of society and public life we're actually going to have. And it matters what our principles are and how we live them out. Because these factors are often what guide people or groups, individuals, or communities, and how they ought to live. It influences their way of life and the dharma, if you prefer. So, it was mentioned I worked as a registered nurse for 10 years in the hospital. And as I was working on my PhD in religion and social ethics, I was combining my experience as a nurse with what I was learning in religious studies. Now, in the United States, and that's the context obviously out of which I've been working, most of the bioethical discussions are grounded in Jewish and Christian perspectives. And that's wonderful, because there's great wisdom that can come from Jewish and Christian traditions. However, I was interested in bringing additional voices into the conversations. And in the United States, we have Hindu, Buddhists, Jains, Muslims that have been living in the U.S. for 6, 7, 9+ generations. They are part of the fabric of the United States. So why not benefit from the wisdom of these traditions? And that's, again, I think that's really important. So in my earlier work, I took the birth narratives of Kunti and Gandhari's children in the Mahabharata, and I pulled out 6 principles that were important to many within Hindu traditions or Dharmic traditions. And I built a Hindu perspective on assisted reproductive technology. Then about 5 years ago, I was asked to contribute to an edited volume called Religion and Ethics in the Neonatal Intensive Care Unit. This book was talking again about religion and ethics, but it was in a specific setting in the public life, specifically within a hospital and more specifically within the NICU. The purpose of this edited volume was to encourage healthcare professionals to become familiar with the religious traditions of the faith communities with whom they were serving, in order to be able to offer more quality healthcare. And I will argue that without an understanding of religious traditions, you cannot offer competent healthcare. You have to understand people's religious traditions. My chapter, Shiva's Babies, began with a discussion on cultural humility. And I can do a whole little workshop on that. I've done workshops across the country on this. And that's where you emphasize the importance that no religious tradition or cultural tradition is monolithic. You all live in families. You have siblings and parents. You've grown up in the same culture, and yet some of you see the world pretty differently than the rest of your family. Right? My brother and I are very close, and we share a common root, but we're very different. Right? So when you talk about religion and culture, you have to remember that each person has their own expression of it.
no religious tradition is monolithic. So I took the principles that I had developed previously and I applied them to the care of the babies in the NICU. As part of this chapter, I sent out a survey across different places in the United States, asking adults, so they were over 18, who self-identified as Hindu and who were living in the United States, to answer some questions about what they would want healthcare professionals to know about their tradition. The last question in the survey asked, what would be important for neonatal intensive care healthcare workers to know about your beliefs and values? Many of the responses were quite touching, especially when you consider the context of the NICU. A survey participant wanted healthcare professionals to know, and I quote, that Hindus care as much about infants in such situations as members of other religious communities, but also they may tend to be more pragmatic in a situation that requires treatment to be discontinued. Again, it is not callousness, but an acceptance that death is a natural part of life and that rebirth is a certain reality. Imagine if you were the parents of an infant in the NICU who is at the threshold of death, and you're stressed out and the grief that's being experienced by the families. This quotation reflects an added burden, a concern that the healthcare professionals might be unjustly judging them for the way they're responding to the situation. In the NICU, it's a very difficult place, and having an understanding of people's religious and philosophical beliefs is imperative. Now, I presented this paper at a NICU conference, and it was attended predominantly by white, US born and raised, and while I don't know, I didn't do a survey, but I would hazard to guess that most of them either were or were very familiar with Christian traditions. So what I brought to the table was a little different. Towards the end of the presentation, I shared the following quotation from a survey participant, and I quote, I do believe that life is precious, but I also believe that life is but a part of a journey that my soul experiences. As I get older, I get more convinced that death signifies the beginning of another phase of my life, not its end. Now, as I read this, I suspect that many of you are hearing something that feels very familiar. However, the people in that audience, it was very different. When you look at understandings of what happens after you die in Jewish and Christian perspectives, this view is very, very different. I ended the presentation with the following explanation, and now I'm kind of quoting myself. The reasons that the title of this chapter is Shiva's Babies is because Shiva, the Lord of the dance, creates, sustains, and destroys the world in his 108 dances. Those of you caring for the NICU infant at the threshold of death, hold in your hands this process. I ended this because I was trying to show them that something in which they are engaged on a daily basis can be interpreted and viewed in many different ways. And I shared this perspective that was probably unfamiliar to most of them. And in fact, at the end of the session, a number of nurses and physicians came up to me and started talking to me and talked about how they had never thought about that. They had never thought about how somebody's religious beliefs could intersect with what was happening in the hospital. Now, me as a religious studies scholar and a nurse, I was like, how could you not put the two together? But some people don't, because they kind of compartmentalize. And then they went on to share the experiences they had and the insights they started having of what other people might be experiencing. I provide this specific example on how religion is functioning in public life because for healthcare professionals, and actually I'd say for all of us, we need to pay attention to
to understand the role of religion, morality, and ethics in the lives of patients or the people that we're interacting with, to be able to deliver in the healthcare professional better care in the most effective manner, but in our case, to be able to better interact and understand those with whom we're interacting. And as we all know, this world right now, I mean, I'll speak for the United States, is really polarized. So how do we talk to people who have a different worldview? We're not going to come together and have any kind of peace if we can't learn how to do that. Let me close with some wisdom from Ushadi. She's one of the founding sisters of the Brahmavidya Mandir Ashram in Maharashtra. And I've been going there for about the last 20 years, and I've been living with the sisters and learning from them. And that's actually the project that I'm working on here on the Fulbright project. But the sisters and Ushadi and the ashram are followers of Vinoba Bhave. And they talk about how he used to say, religion and politics are of the past. And in this case, he is meaning institutionalized religion. Now, he says, is the time for science and spirituality. Science is dealing with the outside, physical, visible world. Spirituality is the inner world, again, that metaphysical, transcendent. He talks about science and spirituality. He says science is the speed and the power of the engine of the car. Spirituality gives it its direction. Think about that. Think about that. And that's our Vinoba Bhave, right? It's very, very important when we talk about what is the role of religion and ethics in public life. One of my favorite quotations from Ushadi is her definition of spirituality. She says, so my simple definition of spiritual life is simple living and high thinking. Unless you have simple living, you won't have high thinking. High thinking means in life, not only in words. So our high thinking is being combined with how we live. This is the simplest definition of spirituality. And now the bell is gone. I always keep that last phrase in the transcript because I love it, because it reminds me, she and I used to meet just before dinner. And we would be in these deep theological, philosophical conversations, and then the bell would go for dinner, and I'd be like, darn! And she's like, time to go. Time to go on to the next thing. Because life keeps going on. And we can get so involved and caught up in our little academic worlds that we forget to live and move along with life as it goes. I love this line. Ethics, morality, and spirituality, and religion are at the heart of how people choose to live in this world. The choices we make on a daily basis are going to determine the type of public life we have, that we create for ourselves, our family, our communities, and the world. So may we remember this idea of simple living and high thinking and create a world in which everyone may flourish and thrive. Thank you. Thank you, madam, for sharing your wisdom with us. विंध्य हिमालय से आरक्षित भारत, गांधी सुभाष से विभूषित भारत, अनादि संस्कृत से सुसंस्कृत भारत, भारतवर्ष की महान सनातन परंपरा को विश्व पटल पर अग्रणी रूप से अपने ज्ञानशील वैभव से सदा अग्रणी रखने वाले माननीय सदगुरु श्री माधवप्रियदास जी स्वामी जी हमारे बीच मौजूद हैं। स्वामी जी बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ वीपी पद्मगुरु शास्त्री जी महाराज, श्री Madhavpriyadasji Swami ji, founder of ancient Gurukul system in modern era. Swami ji has obtained master degree in Vedantaracharya from Purnanand Sanskrit University, Varanasi. Sandipani Vidyaniketan, Porbandar, honored him with the title of C in 2009. The degree of Vidyavati Bhushan was awarded him by two organizations, Sanskrit Research Academy, Melbourne, Gujarat, and Vidyavati Parsat 2009. स्वामी जी के बारे में मैं बहुत तो पहले नहीं जानता था, पर एक बार मैं वेद और विज्ञान के संबंध में अध्ययन कर रहा था, तो 3-4 दिन लगातार अध्ययन करने के बाद मुझे सिर्फ 2 लाइन जो समझ में आई और याद रह गई वो यह कि न्यूटन के चरण जहां रुके थे वहां से आइंस्टीन ने यात्रा शुरू की थी।
और आइंस्टीन और न्यू साइंटिस्ट जहां रुके थे वहां से यदि आगे यात्रा करना हो तो हमें वैद विज्ञान की ओर जाना। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी के हृदय में विराजमान शिव तत्व को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये काशी है। काशी इज नॉट ऑर्डिनरी सिटी, it's divine land, the land of wisdom, the land of dharma, the land of jnana, karma, everything. यहाँ बाबा विश्वनाथ विराज रहे हैं। Each and every atom is charged by divinity of Baba Vishwanath. इसलिए तो इसको काशी कहते हैं। काशते इति काशी। उपेंद्र जी, आपने इस धर्म नगरी में सही विषय पसंद किया है। धर्मशास्त्र एक समय था धर्म और अधर्म का निर्णय काशी से होता था। यहाँ का निर्णय पूरे भारतवर्ष में मान्य होता था। तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, बाबा विश्वनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। खास करके भारतवर्ष के श्रेष्ठ महापुरुष जिन्होंने अपनी आश दृष्टि से इस विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया और मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस भूमि ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक महापुरुष को, राष्ट्र नेता को जन्म दिया। इस दिव्य धरती को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ जिनकी दीर्घ दृष्टि से, जिनके भारतीय सभ्यता के प्रति प्रेम से बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का निर्माण हुआ। पहले क्या स्थिति थी मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ 7 साल रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज क्या है वो आप सब जानते हैं। न केवल बाबा विश्वनाथ अयोध्या, सब धर्मस्थलों का जो इस समय नव निर्माण हो रहा है, लगता है कि भारतवर्ष में नए धर्म का सूर्योदय हो रहा है। इस सूर्योदय के अरुण अग्रदूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने ही यहाँ वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की और हमारे वेदों में जो विज्ञान है उन विज्ञान के विषय में रिसर्च हो और हमें भारतीयों को हम अंधकार में है ऐसे कहने वाले धर्म की महासत्ताओं को ख्याल में आए कि इस देश में ज्ञान का सूर्योदय पहले से है,
आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान आपके पास रखिए। तो हमारे सुधीर जी तो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो तो हमारे गुजराती है, तो थोड़ा देश प्रेम के साथ प्रदेश प्रेम भी रहता है। इस धरती के प्रति कोई अनूठा लगाव है। मेरा यहाँ 7 साल का रहना मेरे जीवन का सुवर्ण युग रहा। यहाँ उत्तर के विद्वान का भी आशीर्वाद मिला है, दक्षिण के विद्वानों का भी इस सेवक को आशीर्वाद मिले हैं। कमलेश जी हमारे सहाध्यायी हैं, दोनों साथ में पढ़ते थे। उपेंद्र जी, आपका नाम है ना वो बड़ा अच्छा है, पेचीदा भी है। एक उपेंद्र ने, शुक्ला जी, एक उपेंद्र ने बलि को फंसा दिया और आज इन्होंने मेरा विषय तो वेदांत का और धर्मशास्त्र की झाग में फंसा दिया। आपने अवसर दिया, मैं आपको अभिनंदन देता हूं। इस ज्ञान की गंगा जहां बहती है वहां हम भारतीय धर्मशास्त्र की विश्व पर जो प्रभावना है उसके बारे में मंथन करने इकट्ठे हुए हैं। बहुत बड़े चौहान साहब जैसे विधिवेत्ता है, न्यायाधीश है, लॉयर्स है, पंडित है। तो यदि मुझसे इस विषय को न्याय न दिया जा सके तो क्षमा करना। एक बात उपनिषद की कथा से मैं आरंभ करना चाहता हूं। विश्व में 2 प्रकार की सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता है, दोनों बहुत पुरानी, एक वैरोचनी सभ्यता है और एक ऐन्द्रीय सभ्यता है। देखिए कितने प्राचीन साल से दो विचारधाराएं चली आ रही है और हर आचार पर विचारधाराओं का बड़ा प्रभाव रहता है। विचारधाराएं जड़ के समान है और धर्म वृक्ष के समान है। तो ये विचारधाराओं के प्रभाव से 2 प्रकार के आचार शास्त्र बने हैं। बड़े विद्वान बैठे हैं, जानते हैं आप, बृहदारण्यक में विरोचन और इंद्र की कथा है। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में प्रजापति से दोनों ने सुना। क्या सुना? एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विवृत्यु अविशोकः अविजिगित्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सह अन्वेष्टव्यः सह विजिज्ञासितव्यः। अब इन दोनों को तो कोई इसको प्राप्त करने में रुचि नहीं थी। फिर प्रजापति ने कहा, जिसको हम छोटे बच्चे को लुभाव की बात करते हैं, वैसे ही ये जो जान लेता है सह सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान यस्तम अनुविद्य विजानाति। सारे लोग, सारा विश्व उत्ता हो जाता है। तो दोनों को विश्व विजेता होने की ख्वाहिश थी। अपनी अपनी सभाओं में दोनों ने कहा, कथा का विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा। दोनों समाज ने कहा कि जाओ तुम इस
विद्या को प्राप्त करो। दोनों गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वे तो गए थे समित पानी, फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा 32 साल तक तपश्चर्या करो, तभी ज्ञान होगा। हमारी गुरुकुल परंपरा रही है। गुरुकुल परंपरा लग्जरी नहीं रही। गुरुकुल परंपरा तप और संयम प्रधान रही है। पर आज तो राजकुमार की तरह बच्चों को कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे कानून भी ऐसे बनते हैं। देखिए, कहीं एक नदी या तालाब में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, दुखद परिस्थिति थी, तो कानून बना किसी को भी सागर के किनारे न ले लिया जाए, नहीं जाने दिया जाए, नदियों में तैरना नहीं, उसका अनुमति उसकी नहीं दी जाए। तभी मुझे हुआ, यदि पश्चिम होता तो ये सोचता कि सुरक्षा की व्यवस्था करो और उनको एडवेंचर का अवसर दो। ये विदेश सोचता है और हम कैसे कैसे कानून बना रहे हैं। तो ये दोनों 32 साल तक तप करके गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यो अक्षिणी पुरुषो दृश्य। अरे भाई, आत्मा तो तुम्हारी आंखों में बसा है, आंखों में है। देखो, जाओ दर्पण में, शुद्ध जल में देखो, तो दोनों सज धज के गए। दोनों ने अपने स्वरूप को देखा। इतना सुंदर सजा हुआ धजा हुआ स्वरूप देख करके दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन विरोचन की यात्रा यहाँ रुक गई। इंद्र की यात्रा आगे चली। ये बात हमारे धर्म शास्त्र की यात्रा की बात के साथ में जोड़ना चाहता हूं कि हमारा धर्म शास्त्र हमें कहां ले जाता है। और देह में ही सीमित नहीं है। देह में विद्यमान हमारा शरीर कोश, हमारा जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, विधि हमारे यहाँ ले जाते हैं। और वैरोचनी सभ्यता का सारा विचार चिंतन देह पे रुक गया। फिर आप जानते हैं कि भीतर जो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं वो आत्मा है। फिर 32 साल का तप, फिर 32 साल का तप सुषुप्ति में जो अनुभव करते हैं, जहाँ कोई अनुभव नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि वृत्ति निद्रा का अनुभव करती है, वो सुषुप्ति है। फिर 5 वर्ष की तपश्चर्या के बाद आत्मबोध होता है। प्यारे भाई बहनों, ये हमारी भारतीय सभ्यता की यात्रा है। दोनों सभ्यता में भेद है। हम देहवादी नहीं है, हम देह में विद्यमान देव की पूजा करते हैं। और हमारे सारे धर्म शास्त्र की विधियां, जिसको आप रिचुअलिटी कहते हैं, और रिचुअलिटी भी एक साधन है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आपके मोबाइल में रिकॉलिंग सिस्टम रहती है, रिमाइंडर सिस्टम रहती है। हमारी सारी विधियां जो है वो रिकॉलिंग सिस्टम जैसी है। वो हमें देह से उठा करके देव तक ले जाती है। इसलिए धर्मशास्त्र का यहाँ प्रभाव है और वो धर्मशास्त्र सर्वव्यापी है और सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। प्यारे भाई बहनों, दो सभ्यताओं में जो अंतर रह गया, ठीक है,
समन्वय करना चाहिए। कुछ उनके यहाँ नहीं है, कुछ हमारे यहाँ नहीं है। भट्टाचार्य जी जैसे ठीक से कर सकते हैं, ये हमने देख लिया, माइक एडजस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कर लिया। तो लगता है कि आप अमेरिका में भारतीय संस्कृति का समन्वय कर पाएंगे। आपको मैं वंदन करता हूँ। जेएनयू के चांसलर बैठे, आपके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, नया सूर्योदय हो रहा है। नारी शक्ति है, मेरी कुछ मर्यादाएं भी है, लेकिन अवश्य हमारे विश्वविद्यालय भारतीय सभ्यता के अनुरूप होंगे, ये हमें विश्वास है। जब आप जैसी नारी शक्ति उसमें सेवा, तो देखिए प्रभाव क्या। उपनिषद कहता है शरीर को संवारने लगे, प्रेत को संवारने लगे, उसके साथ सुंदर सुंदर वस्तुएं रखने लगे कब्रिस्तान में। तो यह पूरा आचार देहवादी आचार है। हमारे यहाँ अग्नि संस्कार है, क्योंकि हम जानते हैं अब इस शरीर का कुछ नहीं है, पंचभूतों में लीन हो चुके हैं, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तो दर्शन, क्षमा कीजिएगा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। वैरोचनी परंपरा में चिंतन है, विचार भी है, लॉजिक भी है, तर्क है। क्षमा करना दर्शन नहीं है। वहां फिलोसोफर्स हो सकते हैं, वहां दार्शनिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो परंपरा ही कहीं रोकी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्होंने श्रीफल को, नारिकेल को तोड़ा है, उसके आगे का सोचा है। अभी हम कमलेश जी से कह रहे थे, जब छिलका टूटता है, देखिए छिलका जो होता है वो अंदर का जो मावा है, हम तो शुक्ला जी उसको कोपरा बोलते हैं, भीतर जो मावा है और जल है उसकी रक्षा करता है, और उसको तोड़े बिना पा ही नहीं सकते। तो हमारा जो धर्मशास्त्र है, हमारे भीतर की जो दैवी शक्तियां है उसकी रक्षा भी करता है। और आखिर हमारे ऋषि इतना साहस रखते हैं कहने में, भवा ये ते यद्रधा यज्ञ रूपा। ये सारे जो यज्ञ विधान, विधि विधान है, आखिर उनको भी छोड़ना है, कोई धर्म नहीं कह सकता। इतनी हिम्मत किसी के धर्म में नहीं है। हमारे कृष्ण ही कह सकते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। ये जो साहस कृष्ण में है, विश्व के किसी धर्म गुरु के हृदय में ये साहस नहीं है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की विशिष्टता है। धर्मशास्त्र व्यापक है, कई मान बिंदु है। धर्मशास्त्र की मीमांसा की परिभाषा में मैं नहीं जाना चाहता। विधि क्या है, मंत्र क्या है, नाम क्या है, वो क्या है, वो क्या है, और क्या है। हमारा धर्मशास्त्र हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, ब्राह्म मुहूर्त से लेकर शयन करते हैं तब तक, व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, हमारा धर्मशास्त्र हमें प्रेम से जोड़ता है। भट्टाचार्य जी ने अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सुंदर व्याख्या की, मुझे अच्छी लगी। सादगी हो ये हो ये हो, लेकिन जब हम अध्यात्म का विचार करते हैं तो उसमें सर्वव्यापी परम तत्व है, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सर्वव्यापी परम तत्व को प्रेम करो,
से प्रेम करो, लताओं से प्रेम करो, पहाड़ों से प्रेम करो, चांद सितारों से प्रेम करो, हर वर्ग को प्रेम करो, हर मनुष्य को प्रेम करो। ये प्रेम ही अध्यात्म का सूक्ष्म रूप है, ऐसी मेरी समझ है। तो प्यारे भक्तों, देखिए उपेंद्र जी ने रूप और सत्य की बात कही। ये पूरा विश्व नियमबद्ध है। सूर्य, चंद्र, चांद, सितारे सभी नियमबद्ध है, छंदोबद्ध है, लयबद्ध है। उसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सागर में ज्वार भाटे का टाइम टेबल बना सकते। एक आदमी ही ऐसा है, वो टाइम टेबल पे चलता ही नहीं। इसको टाइम टेबल पे चलाने के लिए धर्म की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इतने स्मृति शास्त्र है। वेद तो धर्म मूल है, धर्म का मूल है। इतनी स्मृतियों क्यों हुई? जीवन धारा स्थगित नहीं। जीवन धारा अविरत भागीरथी गंगा के प्रवाह की तरफ बहती है, तो धर्म भी उसी तरफ बहना चाहिए। जो धर्म स्थगित हो जाए तो छोटे से पौंड में बदल जाएगा, वहां से सुगंध नहीं दुर्गंध उठेगी। और यदि ये स्थगित हो जाएगा तो ये म्यूजियम का प्रदर्शनी का पदार्थ हो जाएगा, उसमें जीवंतता नहीं रहेगी। भारतीय सभ्यता सद्भावी है। यहाँ तथागत आते हैं, तीर्थंकर आते हैं। उपेंद्र जी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में पूरा करता हूँ, क्योंकि और लोगों को भी अपने विचार कहने हैं और हमें युगानुरूप मार्गदर्शन देते रहते। भारतीय सभ्यता का सद्भाग्य है और इस परिवर्तन का हमें स्वीकार करते रहना चाहिए। लेकिन हमारी जो शाश्वत धर्म मूलक आस्थाएं हैं, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि, उनको सामने रख करके परिवर्तन करना चाहिए। क्या और कैसे परिवर्तन और कौन कर सकते हैं, वो तो आप न्यायाधीशों के हाथ में है। धर्माध्यक्ष है आप। धर्माध्यक्ष की विशुद्ध चेतना। भारतवर्ष के ऋषि कहते हैं जो धर्माध्यक्ष होते हैं वो किसी मीडिया से या राजकीय विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। वो विधि शास्त्र के प्रति ही वो वफादार होने चाहिए। और राजा भी धर्मज्ञ है। इसके बारे में भी बहुत लोग कहते हैं राजा के ऊपर धर्म गुरु होना चाहिए। अरे यार, किस धर्म गुरु की ताकत है कि राजा के ऊपर हो जाए? लोग समझते हैं, क्षमा करना, समझते ही होंगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ राजा धर्मज्ञ है, उसका अर्थ यह है वो संविधान से दज्ञ है, नहीं किसी व्यक्ति से दज्ञ है। हम इस यदि व्यक्ति के रूप में ले जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी जो न्याय विधि है उसमें भी एक छोटे से साधु की दिल की बात कहना चाहता हूँ, उसमें बैलेंस होना चाहिए। हम किसी भावावेश में आकर के कानून बना देते हैं, बनना चाहिए, किसी की रक्षा करना है, उनको संरक्षण देना है, कानून बनना चाहिए। लेकिन कानून बना देते हैं, लेकिन कानून का यदि मिसयूज होगा तो वो भी दंड होगा, ये बात छूट जाती है। इसलिए और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है एक ही विषय है, एक को पुरस्कार मिलता है, एक को दंड मिलता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कहीं कहीं सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, बहुत सी चीजें हैं। हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे 4 आश्रम, 4 वर्ण,
जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मूलतः पराधीनता से कुछ दूषण हम में आए उसको हमें निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। और पंच यज्ञ आदि कई विधियां हैं इसमें। हम चाहें कि हम पश्चिम के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखें। मैंने तो बहुत सीखा है पश्चिम से। पहले तो स्वच्छता सीखा। धर्म की बात करते हैं कितने स्वच्छ है, हमारे धर्मस्थान कितने स्वच्छ है, वहाँ के संडास बाथरूम जितने स्वच्छ है उतने हमारे किचन स्वच्छ नहीं है। तो हमें स्वच्छता सीखना है और उनको पवित्रता सीखना है। वो जो शैम्पू रखते हैं ना, और कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, वो देखना चाहिए। कैसी बातें हैं, आइए हम सब मिल करके धर्म के तो बहुआयामी बातें हैं उनको समझ करके आज से आखिर ये सारी बात हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने वाली है। इसको ध्यान में रख करके सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हमारा मूल मंत्र है। हम बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स का भेद नहीं करते हैं। हम हमारे ही डिवोटी सुखी हो ऐसा भेद नहीं करते हैं। हम जीव प्राणी मात्र सुखी हो, इससे बड़ी सामाजिक विभावना और क्या हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इसी भावना के साथ हमारे धर्मशास्त्र को समझने का प्रयास करें। अस्तु, धन्यवाद। जय भारत। ये देश प्रतिभाओं का है, ये देश आचार्यों का है, ये देश महापुरुषों का है, ये देश अवतारों का है और उन माताओं का है जिसने भगवान और महापुरुषों को जन्म दिया। महाराज गोविंद गिरी जी के इन विचारों से प्रेरित श्रद्धेय स्वामी जी के उद्बोधन के लिए हृदय से आभार कि आपको आपका सभा को आशीर्वाद। दार्शनिक शोपेनहायर का कहना था कि विश्व में यदि कोई भी सर्वाधिक आई है तो वह केवल उपनिषदों की भूमि भारत से। मैक्स मूलर भी जब इस पुण्य भूमि के दिवत्व से परिचित हुआ तो उसने अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में लिखा, यदि मुझसे पूछा जाए कि आकाश मंडल के नीचे वह कौन सी भूमि है जहां मानव ने अपने हृदय में अवस्थित ईश्वरी गुण का पूर्ण विकास किया, तो मेरी उंगली भारत की ओर उठी। आज वह ठोस आधार कहाँ लुप्त हो गया इस महान संस्कृति का जिस पर महल स्थापित था। इन्हीं विचारों पर मंथनीय विद्वानों की श्रेणी की अगली कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर शांति श्री मुरलीपुरी पंडित, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, मैडम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन इंटेलिजेंस वाइस चांसलर ऑफ इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी जवाहरलाल, teaching and research career spanning over 3.5 years, beginning with lecturer at Goa University, joined as the University of Pune, now Savitribai Phule Pune University, in Department of Politics and Public Administration, holding the additional charge of Director International since 2001 to 7. And she is known to many languages like Telugu, Tamil, Marathi, Hindi, Sanskrit, English, and can understand Kannada and Malayalam. ऐसी प्रतिभा संपन्न Respected Sadguru Shree Madhavpriyadasji Swami ji, respected Honorable Dr. Justice V.S. Chauhan ji, my previous speaker Dr. Swasti Bhattacharyya, Honorable Rector of the University Professor V.K. Shukla, Dr. Upendra Kumar Tripathi ji, Dr. Kumar, and scholars here, and ladies and gentlemen and students. I am by accident a guest of honor, and in this great, assembly of scholars on jurisprudence, I think I would beg my ignorance of the subject to a large extent, but would like to speak from the idea of the Indian knowledge systems. The question is, should we decolonize our humanities and here jurisprudence? Let me congratulate the BHU on especially the Center for Vedic Sciences and especially on Vedic Jurisprudence and its impact on the contemporary world. I think very well chosen.
I would generally talk while paying my respects to a great educationist, Madhavpriyadasji, Madan Mohan Mahaviraji. Thank you once again. I'm just going to put a few ideas in front of you. The question is, can we decolonize the Hindu mind or even the Indian mind? I think this is very important because we have had a history of looking at our own civilization after the Macaulay's Minute and even before with self-hatred and self-loathing. I think we will have to make that paradigm shift, and I agree with Swamiji that this paradigm shift took place in 2014. And it is a golden period for us where we should all come together and make this paradigm shift. I thank BHU for organizing this on jurisprudence. The issue is, can we bring in the questions of objectivity, subjectivity, and positionality of our knowledge systems? I would say yes. Why, as Swamiji before me has said, please understand there are only two civilization states that have entered the fourth industrial revolution, and one is India. So there is some strength, some resilience in this philosophy, in this civilization, and the other is China. Whereas all other civilizations, including the great Greek civilization, have lost its moorings, or there is no continuity. So what I would say is the hallmark of the Indic civilization is tradition with modernity, continuity with change, realm with region, and myth with reality. We are also the civilization state that tries to bring in excellence with equity and equality, and integrity with innovation, as well as invention and inclusion. This is extremely important, and that is where I would like to first place it before most of you thinkers, even when you're talking of jurisprudence. The other is colonial interpretations of knowledge systems have to be contested. I'm not saying you throw the baby with the bathwater out, but the question is, power is knowledge. No longer knowledge is power. So the cultural, psychological, and economic freedom and intellectual sovereignty, this is very important, and I think we have the right and ability to practice self-determination over our own land, cultures, and political systems. And here I would say what we would need, a geoculturalism is a must. And it is here I believe that India as a civilizational state does not contest India as a constitutional state. Let me tell all of you that the Dharma Shastras written by Madhavpriyadasji D.G. Khani is a great classic. Do any one of you read it in your law degrees? We don't. The other is, the Honorable Prime Minister has been saying that India is the mother of democracy. It is based on solid proof. I think all of you should look a little south. I come from the state of Tamil Nadu. Most of you should know 800 years before the Magna Carta. As a professor of political science, I am taught that the Magna Carta is the origin of all democratic traditions. I would not agree with it. I beg to differ. It is the Uttaramerur inscription of the Cholas where you have a clear or republic democracy. I am not talking about myth. It is a reality. Do we teach them in our class textbooks? Do most of you know even that the Cholas existed? No, the symbol of the Cholas was Shiva. Shiva the creator, Shiva the maintainer, and Shiva the destroyer. Do you know the Cholas went into Southeast Asia? If today we are talking of India's soft power in Southeast Asia, it is thanks to the Cholas. And we did not conquer by loot, murder, genocide, and rape. We conquered by trade, commerce, and culture. This is what this civilization is about. Let me tell all of you that you must be proud of your own civilization. Let me also say, when we construct narratives, you will ask me, madam, what is so
unique about this civilization. I would only beg to tell most of you here that India has its own, see, universalism as put forward by the West is not what we talk of universalism. We talk of it as Vasudhaiva Kutumbakam, meaning India has its own distinct and unified civilization with a proven ability to manage profound differences, engage creatively with various cultures, religions and philosophies, and peacefully integrate many diverse streams of humanity. These values are based on ideas about divinity, like what Sadguru told us, the cosmos and the humanity that stand in contrast to the fundamental assumptions of the Western civilization. I also say, please don't equate dharma to religion. It is not religion. And I think in the Judeo-Christian traditions, or even within the Abrahamic religions, their approaches to the divine is very different. And they are very worried about chaos. Whereas we are at peace with chaos. And we don't want to control, they want to control. And we are not we are a way of life. We are not a religion of one book, one prophet and one sword. And that is very important. And we basically believe in Adhyatma Vidya. And this is where I would say that don't compare incomparables. Why? Because we have no anxiety over chaos. We are very comfortable with complexity and ambiguity. So integral unity versus synthetic unity. The Indic civilization has that. And I would say Sanskrit non-translatables should not be translated into English. Because English is insufficient. So Sanskritize English. This is my advice to most of you. And why shouldn't Indians, like Swasti has come from studying religions from a Western view, Indians should study the West called Westology. I would say that the Center for Vedic Studies must have a course how we Indians look at the West. And I would only finally would like to end with a quotation from Sarvepalli Radhakrishnan, who said Hinduism is not just faith. It is the union of reason and intuition that cannot be defined but is only to be experienced. Hinduism is a movement, not a position. A process, not a result. A growing tradition, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe will be found equal in any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or of history. So finally, I would like to tell most of the scholars here, congratulating the BHU for this initiative, that let us move ahead together with pride and self-confidence. We are a great civilization. We need not be told of it every time. And I thank you once again. Thank you so much. Ellarkum nandri vanakkam. धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में स्फूर्ति नो जीवन नौ प्राप्त करो। ऐसी ही संचेतना का संचार करने वाले आपके ये उद्गार और देश को स्वावलंबन की दिशा की ओर प्रगति को ले जाने वाले आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। Thank you very much, ma'am, for sharing your deep knowledge with us. Now we feel honored to have with us the Honorable Chief Guest, Honorable Dr. Justice B.S. Chauhan, sir, former Chairman, Law Commission of India and former Judge, Supreme Court of India, New Delhi. Sir, you hardly need any introduction, but sir, passed BSc in year 1970 from Vedic University, graduated in the law in the year 1974 from Faculty of Law, BANARAS, Hindu University. Sir, awarded foreign scholarship and was awarded PhD by Victoria University, Manchester in year 1979. He enrolled as an advocate in April 1974 and practiced in Supreme Court and Delhi High Court in civil, criminal, commercial, tax and service matters. He also served as a counsel for the government of Uttar Pradesh and Noida in Supreme Court. I request
sir to please come on the dais and say his visit, sir. Srimati Shanti, Shri Pandit Ji, the learned Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, Professor Swasti Bhattacharyya Ji, Professor V.K. Shukla, Rector BANARAS University, a renowned and eminent surgeon, Professor Upendra Tripathi, Dr. Kumar Ji, from Shraddhe, Sadguru Sri Madhavpriyadasji Swami Ji, my old friends, Justice K.T. Sankar and Justice S.N. Keynote, Professor Abhati Vedi and Professor B.M. Pandey, my seniors in the law school who have guided me properly, distinguished participants, ladies, gentlemen, gents, and dear students. I feel privileged to be a part of this august house in a subject which I cannot claim to know anything about. I know, and it is prohibited in law to repeat it again. So I was very much reluctant to come. But realizing that whatever achievement I could get in my life, it is because of this. So I could not afford to say no, and I feel reluctant to speak on a subject in presence of so many scholars. I spent about 18 years in the hostel, and I learned where the food was served in groups, first, second, third, that you must go for food in the first group, because if you go in the last, there will be nothing to eat. When you speak in a group and several persons are there to speak, you must be the first speaker. If you are the last, there will be nothing for you to speak, because you would repeat what your other scholars have already spoken. Dear friends, say we are talking of Hindu jurisprudence, and the jurisprudence is based on Veda, the scriptures, and Dharma Shastra. It is well based on Dharma, Karma, and Moksha. All these three had been part of Indian culture and philosophy. Society was accept to all noble thoughts irrespective of their sources. Ano mudra katvayantu vishwate. Rigved said, let the noble thoughts come from all sides. Vedic literature is a reservoir of knowledge and values. We have a judicial system. Imagine a situation where there was no civilization. It was supposed that if I commit wrong, God will punish me. It will be a sin to commit a wrong. What is the punishment? Remorse, paschata. When civilization developed, king took the responsibility of God to do justice. That is why even today we say dispensation of justice is a divine permission. But later on, with the development of civilization and population, where number were more, the duty had been assigned to the judges duly appointed by the kings. Now, the Veda influence the idea of justice as a balance of social, moral, and cosmic forces. Punishment varied depending upon the offense and could range from fines, exile, and death. Vedic principles have a lasting impact as it is continued to influence the contemporary legal system, not in India, but in other countries also. Justice restores balance and harmony in the society. Our Vedic jurisprudence gave importance not only to compensation, but retribution system. Administration of justice with punishment serving as a deterrence for future wrongdoings. Various texts laid down guidelines and evidence
and witness testimony as well as the procedure for appeal and mitigation of punishment. The duty of the king had been to provide appropriate punishment to those who behave improperly. Magna Carta, my sister had spoken about it, was signed in 1250. And what was the reason? King John and his son King Henry in 13th century were very greedy kings. They imposed tax on everything. Whatever you do, pay the tax. Be it a case of remarriage of a widow, or we have the caste system, they had a class system. Upper class, lower class, middle class. If a man of a lower class wants to marry a woman of a middle class or upper class, he has to pay the tax. What was the amount of tax? Depends upon the capacity of the payer. How much you can afford. What we call it Gunda tax. The only difference in income tax and Gunda tax is income tax is legalized for the development of the society. Gunda tax is recovered according to the capacity of the person who can pay. They also called to be Samajwadi. We take it from you and give it to the poor people. Help them to arrange the marriage of their daughters and functions. Give them facility, provide them water, food. They are also worshipped. And this is the reason many of them are sitting in parliament and Vidhan Sabha. So, in this situation, the people revolted. You can't tax charge on everything, whatever we say. Tomorrow you will impose the tax even if we laugh. Under this protest, an agreement was reached. And certain liberties were granted to the individual. And first time two principles were laid down so far as the law is concerned, because it's detailed. This is the first codified law available. Others are uncodified. Magna Carta was never enforced. Nobody enforced it. But it became an example, a milestone, a foundation, what the law could be, what may be the meaning of personal liberty. So far as law is concerned, two principles were laid down. Article 39, no person can be arrested without the order of the court. 40, justice will not be denied to anyone, nor justice can be delayed nor sold. Now these two questions, delay and selling justice. Even 900 years ago, there could be delay in deciding the cases, otherwise this provision could not have been there. There should be corruption in judiciary also, what we talk today. So all these things prevail there. But Magna Carta provided a way how it could be. And the first principles, when it said nobody can be arrested without the order of the court, deprived the king to pass an order that you arrest a person. Therefore, the rule of law, Magna Carta is known as a mother of rule of law. Nobody is above the law. Sir Henry Blackton, in 13th century jurist, was writing a comment on Magna Carta, and he said, as the king has lost the power to arrest a person, he is under no one except the God and law. So law was put higher to king, and it is believed that this is the first instance how the rule of law came into existence, because later on, in 1606, Sir Thomas Edward was the Chief Justice,
He told the king, you cannot do it. You are under the law, you are bound to follow the law. King told him, you are my domestic servant, I am your appointing authority, I have appointed you. What Swamiji referred, whether Dharam Guru can tell the king. Here the situation arose. Ultimately, King Edward told him, sir, you may be the king, but you are under the law. And king dismissed him from service in 1610 and said, let go, you and your law, let go better. This, how the rule of law could not prevail. Subsequently, Parliament insisted, king was beheaded not to following the law, therefore the rule of law adopted in England. What was in India? Chakravarti Samrat Santanu wanted to marry Matsugandha, the daughter of a poor boatsman. He could send 3 soldiers, kidnap this girl and bring her. I want to marry her. He did not. Why? Even today in IPC it is prohibited to kidnap a girl for marriage. It's a punishable offense. You can be detained in jail for 7 years, 10 years. At that time, there could have been a law to kidnap a woman for marriage. And King Santanu might have thought that he was under the law, bound to observe the law. Therefore, he could marry Satyavati only after Devvrat became his son and sacrificed his entire future for the happiness of the father. So many. Duryodhan goes to Gandhari. Bless me, I should one. She said, no, yato dharma tato jaga. Law will prevail, not my wish. You should not. You should succeed in Mahabharata only if you are supported by dharma. Law is there in your support. So, when we talk of so many things, we think, even as a student of law, we were taught everything what the Western philosophers, legal jurists have explained to us. But all those things existed in our jurisprudence much before. When I was a student in Manchester University in 1975 to 79, there was a movement, woman liberation movement. It's my body, I have a right. It's my sovereign right over my body. I will use my body the way I want. If I want to give birth to a child, I will give. If I don't want, even my husband cannot force me to give birth to a child. So, they wanted complete liberty. Individual. We had a system of karta. He would decide everything of the family. The family member did not have any right. Karta will decide. This is Article 21, which says, no person shall be deprived of his life and liberty. This person has been interpreted as an individual. And therefore, in our social system, the karta lost any significance. Now, in the same system, I was also invited to speak there. I say, you are fighting for freedom, woman, that I don't want to disclose the name of the father of my child. Several thousand years ago, we have the story of Satyakam Putra Javala. The Maharishi admitted Satyakam in spite of the fact that he did not know who was his father. Javala was not able to tell. She simply said, sir, I am serving so many saints, I do not know who is the father. I have a physical relationship with some of them, I do not know who is the father of the child. I say, for the sovereignty over your body you are fighting now. We have Satyakam Putra Javala, and later on he became a great scholar of Vyakaran. So all these things, what we borrow or we look
to the Western jurisprudence had always existed. Law precedent, we are bound by the judgment given earlier. Mahabharata says, Mahajano Yuvate Gata Sapantha. Path followed by right virtuous person is the right path. So the concept was there. Excellent secular court system existed prior to Mauryas and Mughals. Now Professor Bhattacharya had talked about religion, spirituality and morality. There are two schools of thoughts, natural law school and positive law school. There is a conflict in them. One school says there cannot be a law duly without support of morality. Others say morality has nothing to do with the law. Law and morality cannot be coextensive. And had it been so, we could not have the system of sati, slavery and untouchability. Sati was rampant, system prevailed. We were so greedy person. If a young man dies, his widow sacrifice, self-immolation. If sati, now this could not be when Raja Ram Mohan Rai witnessed that his own sister-in-law, young sister-in-law, was forced to commit suicide. He fought against it. William Bentinck regulations 1829 came, which made it a punishable offence. 1200 petitions were filed in the Westminster Parliament that this is the right of a Hindu woman to commit suicide. Therefore, this law should be recorded. Raja Ram Mohan Rai could not afford to go to travel to England. At that time, Delhi was ruled by Mughal Emperor Akbar II. He financed him, he made the arrangement. Raja Ram Mohan Rai was sent to London. He met all the members of parliament, explained the position, and law could not be withdrawn. It was enforced. But see the sacrifice the man had made. Raja Ram Mohan Rai could not bear the cold, could not tolerate the cold of England. He died there. And even his body was never brought to India. It was cremated there. So, judge and his conduct. What kind of judge should be there? Who should be made judge? Our Sukraniti provided that a judge shall have the characteristic that he would not be attached, he should not have attachment, he should not be greedy, he should not have fear, enmity or bias. Now Sukraniti came much earlier than Socrates. Socrates had described a similar character for a judge and a duty to hear courteously, to hear answer wisely, to consider soberly and to decide impartially. In 2002, international group was formed to lay down certain norms for the judges of the world, not of India. And the final draft was signed at Bangalore. So it is known as Bangalore Principles of 2002. But the principles adopted for the conduct and ethics of the judges are nothing reiteration of Sukraniti's are. Nothing new there. For the reason, a judge trying a case himself remains on trial as he is under the public voice. Therefore, it is advised that judge should live like a hermit, a Hindu widow, or a virgin. Nobody should raise finger about his own conduct. A judge of Allahabad district court appeared in the LLM examination
and was caught using unfair means. So he was not permitted to continue to take the further examinations. But High Court initiated the disciplinary proceedings against him, and he was dismissed from service. Before the Supreme Court, he raised the defense. Sir, it has nothing to do with my judicial duty. My examination, even if I pass the examination or don't appear in the examination, has nothing to do. I could have continued as a judge. I have not taken bribe. Deciding a case, I have not favored a party. So my examination, using unfair means in the examination, has nothing to do my judicial duty. Therefore, I could not have been dismissed from service. The Supreme Court rejected it, saying you cannot have double standard. If you have a right, if God had given you a right to judge the correctness or the conduct of others, you have to be as pure in your personal life as in court. It's prohibited, so he was dismissed from service. Now, Vedic literature provides that a scholar well versed in Dharma Shastra, that is the law, should be appointed as a judge. And Manu Smriti, we can criticize it for many reasons. Because once he say, Yatre narastu pujante ramante tatra devata, yatre tathastu na pujante sarvatra alakriya. But when he deals with the right of a woman to enter into a contract in chapter 9, and says, Pita rakshati kumare bharta rakshate omne raksanti asthavire putra strina satatanam mata. Now, we criticize it, that he deprived the woman, that a woman who is protected by her father in young age, by her husband in the young age, or childhood and young age, and by her husband, and then by children. But he meant that she should not be given a right to enter into a contract, because she may be very emotional. She may not be able to go to the court. Even today, section 132 of the Code of Civil Procedure provides a guarantee for a Parda Nasin lady that she will not be called in court. If I am a plaintiff and I do not appear in the court and lead evidence, the court cannot allow my suit. It will not be decreed in my favor. If the plaintiff has not come, it will not be decided in my favor. But if a plaintiff is a Parda Nasin lady, even today, she cannot be forced to appear in the court. So much respect for the woman. Even today, it has been inherited from that part of the Manu Smriti Yatre Narastu Puja. Supreme Court had interpreted this right under Article 132. It's a right of the woman, not the discretion of the court. Under no circumstance the court can refuse this privilege to the woman. It must protect the respect of a Parda Nasin lady. There is delay in deciding the cases. We know this King Naraka. Two people went, litigants went and waited. King did not come. He was not accessible. उन्होंने उसको शराब दे दिया अगली जन्म में कुछ क्या हो जाएगा, उसको कहा छिपकली टाइप कुछ हो जाओगे। तो वो जो एक भय था न्याय करने का, वो हमेशा दिखाया गया हमारे जो स्टूडेंट्स में। अभी 2018 में पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक केस तय किया और उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। चूंकि वो केस 100 साल पुराना था, वो 1918 में दाखिल हुआ था जोधपुर के किसी कोर्ट में, फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान चला गया, तो 2018 में
वो केस उन्होंने तय किया और उन्होंने कहा शर्म की बात है, हम 100 साल के बाद केस तय करते। मैं 2013 में केस सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको 1923 में प्रिवी काउंसिल ने रिमांड किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग था और कुछ मिसलेनियस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। तो केस तो निपटा दिया जो होना था। मैंने उसको प्राइवेटली चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट के सर ये क्या है, 120 साल पुराना केस अभी तक पेंडिंग है। 3 दिन के बाद खबर आई ये सबसे पुराना केस नहीं है। तो आप ज्यादा चिंता मत करिए, हमारे पास 230 वर्ष पुराना केस है। तो फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बाद में हमको मिले, हमने उनको बधाई दी, हमने कहा सर यहाँ भी आप हमसे नहीं जीत सकते। आप हमसे किसी क्षेत्र में नहीं आगे हो सकते, सवाल ही नहीं है। आप कोई कानून की किताब ले, लॉ के सब विद्यार्थी जानते हैं, उसमें सेक्शन 2 होता है या उसके आसपास, जिसमें डेफिनेशन क्लोज होती है। उसमें यह भी लिखा रहता है, जैसे सीआरपीसी अगर आप पढ़ेंगे तो कोर्ट क्या है, जज क्या है, इसकी डेफिनेशन बताई जाती है। हालांकि जज की कोर्ट की डेफिनेशन बताने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन बताई जाती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 13 में लॉ की परिभाषा बताई गई है, लॉ क्या होता है। लेकिन आज तक किसी ने किसी भी देश में किसी भी डेफिनेशन क्लॉज में ये इंक्लूड नहीं किया कि जस्टिस की डेफिनेशन क्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संभव नहीं है। जस्टिस के इतने रंग हैं, इतने कॉन्सेप्ट हैं। एक पर्शियन स्कॉलर ने इंडियन जुडिशरी के ऊपर कमेंट किया कि जस्टिस क्या होता है इनके हिसाब से। उन्होंने कहा कि एक क्लाइंट था जो बेचारा लिटिगेंट था, परेशान था, बहुत दुखी था, तारीख जाता था कोर्ट में, तारीख लग जाती थी, तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि इस जज को सिर्फ तारीख देने की पावर है, फैसला करने वाला जज कोई और। 2 तरह के जज अपॉइंट होते होंगे, एक तारीख देने वाला, एक न्याय करने वाला। तो कभी तो कोई न्याय करने वाला जज अपॉइंट होगा, इसलिए मैं तब मेरा केस का फैसला होगा, तब तक तारीख लेता था। उसको किसी ने समझाया कि हर जज को पावर होती है, इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक दिन गया, कहा कि आज आर पार है, अगर आज फैसला नहीं हुआ तो मैं मुकदमा छोड़ दूंगा। मन में बड़ी बेचैनी थी, परेशान था, गर्मी बहुत थी, दुखी था, पैदल जा रहा था। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिला, उसके नीचे बैठ गया, 5 मिनट आराम कर। सामने देखा तो खेत है, उसमें बहुत बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। ऊपर देखा बरगद के पेड़ पे बहुत छोटे छोटे फल लगे। तो कभी नीचे देखे, कभी तरबूज पे देखे। उसके मन में एक ख्याल आया, बरगद का इतना बड़ा पेड़ और 5 ग्राम का फल, ये लचर पचर सी लता, इस पे 10-10 किलो की, ये कितना बड़ा अन्याय है। और अगर ईश्वर न्याय नहीं कर सकता तो इस न्यायाधीश से मैं क्या उम्मीद। और अगर कोई उम्मीद नहीं तो मैं क्यों जाऊं तारीख लेने? मैं बेवकूफ इतने साल से तारीख लेने जाता हूं। खड़ा हो गया गुस्से में, मुझे ना न्याय चाहिए। जब कुदरत न्याय नहीं कर सकती तो ये क्या करेगा? चलो भाई। तो श्रीमान जी गुस्से में आके खड़े हुए, घर वापस जाने के लिए। एक छोटा सा फल टूट के उसके सिर पे लगा। उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर ये 10 किलो का होता तो आज नाम सत्य हो गया। तब उसको समझ में आया ईश्वर का न्याय सही है। बहुत सोच समझ के ईश्वर ने सब किया है। अब समझ में आया, अगर ये न्याय कर सकता है तो न्यायाधीश भी न्याय करेगा। और कोर्ट में पहुंच गए।
अब जाते जाते उसके दिमाग में 100 बात आ रही थी, जज बेईमान हो सकता है, मेरा वकील बेईमान हो सकता है, दूसरा वकील तो मिला हुआ है, जज साहब मेरा वकील बोलता है तो जज डांट देता है, दूसरा वकील बोलता है जज साहब हंसता है, तो मिले हुए हैं, मेरा वकील बेईमान है, कोर्ट में झगड़ता है, कोर्ट के बाद हाथ पकड़ के समोसा खाने चला जाता है। इस उधेड़ वन में वो कोर्ट में पहुंच गए, जाके न्यायाधीश महोदय के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सर आपको पावर है फैसला करने की, तारीख देने की, नहीं फैसला करने की पावर। तो उसने बहुत अच्छा कहा, क्या मतलब he felt frustrated, do whatever you want to do, I want the end of this litigation, सजा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे, बहुत देर हो गई है, बेहतरीन इंसाफ का सब फैसला सुना। Delaying justice defeats everything. I had witnessed the incident in my own court, where it came to the notice of the court that one doctor went unpunished. He did not face the trial on technical ground. He tried to rape a nurse who was saved by others. But so many technicalities were taken that he could not face the trial. When it came to the notice of the High Court, it exercised its power, divisional power under Section 397 with 41 CRPC, and directed that you appear on next month and you face the trial. All orders passed till today in your favor by any court or any government are quashed. Go and face the trial. Against this order, he went to Supreme Court. Supreme Court said, High Court had passed the order that you conclude the trial as early as possible to the trial court. Supreme Court said nothing doing. You will conclude the trial in 3 months, and you are directed to appear before the court concerned on Monday, and trial will be day to day. How can you escape the punishment in such a case? No trial. The man was trying to go to the court, he suffered a heart attack and died. Now debate is started, public debate. What is justice? Justice to whom? This person lost life, he suffered a heart attack, and people objected to the order passed by the High Court and Supreme Court. For the reason, the court should have thought what will be the life of this girl, nurse, because of this delay. 14 years ago, situation could have been different. Today she may be married, having children. Could she be directed to appear and depose and face the ugly defense in the cross-examination? The lawyer, how it happened? What will be her position? Whether her family would accept, husband and children will not doubt her chastity. Therefore, this was not a nyaya, it was a greatest nyaya to this woman. So, this is the reason why we could not define, or nobody could define justice, because it varies from situation to situation, person to person. And it becomes very difficult to understand what could be the... Now, our Vedas say you should appoint a judge who is well versed with law. What will be the situation if a judge is not well versed? East India Company developed their Sadar Diwani Adalat and Sadar Fauzdari Adalat in India. They introduced their own system. English people were appointed as judges. In 1809, in Sadar Diwani Adalat, Banaras, a suit was filed by a woman saying, my son-in-law had sold my daughter for 15 rupees. I am willing to pay 15 rupees, but I want the restoration, the possession of my daughter. This was a special case. The judge, who was an English gentleman, could not even imagine that a woman is a sellable commodity.
He constituted a larger bench, 2 judges, 3 judges. Though it was unheard in the trial court. But all were English judges, they were not able to understand what is the system and how this woman can be sued and how to decide this suit. So we have now Article 143 in the Constitution. President can ask the Supreme Court to give advice on any legal issue. All 3 English judges thought we should take advice of Dharam Shastris of Banaras regarding this matter. So they called for the names who are the best scholars of Hindu Dharam Shastra. 5 names were chosen, and unfortunately they gave the opinion. Had woman not been a saleable commodity, how Taramati was sold by Raja Harishchandra? How Yudhishthir lost Draupadi in game of dice, and judgment was delivered against that woman. So it is very important that the judge should be well versed. We have preserved all the orders in the High Court. This is the copy of the judgment given by 3 English judges based on the advice of those 5 scholars. How those scholars could not say, because interpretation of law is a very important thing. It is a tool in the hand of a judge. Interpretation should be according to law. Law is to be interpreted as per the demand of the time. Something which was not good at that time may be good today. Because of the Constitution, we have saved this situation. But this interpretation, rule of interpretation, is exercised by the judge to take the law ahead, to protect the human dignity. In 1772, when the slavery was rampant throughout the world, a person was captured from South Africa and taken to Jamaica. The ship he was put in the cage and was not given food for 3-4 days. He started crying, and this ship had anchored in Thames in London. A lawyer was walking here and there. He heard the cry, came to know that this person has been put in the cage and not given food for last 4-5 days. He filed a writ of habeas corpus. Habeas corpus lies to release a person illegally detained. Now the question arose, is slavery prohibited? Writ will lie only if slavery is prohibited. The argument was rejected by Chief Justice. Said, you show me the law which permits the slavery. See the interpretation. Power of a judge to interpret the law. I am not interested to know whether there is a prohibition or not. You show me the law which permits slavery. How did you do it without the permission of the law? And therefore he released him there. See the reverse. How the mind of the judge works. A businessman in America, in his factory, he was taking the goods from his factory to market in a Tonga. Flood came suddenly and everything washed away along with the horse, goods, Tonga, and a Negro who was driving the cart. When he claimed compensation against insurance, the judge refused to grant compensation for a Negro as a person. They said Negro was a property, being a slave of his master. Therefore, you cannot claim compensation for him as a person. It will be only as a property. So this kind of interpretation, and it varies. Even recently given this very wide interpretation or expensive interpretation of Article 21 in Puttu Swami, this right of privacy. The Supreme Court not only changed the law but the entire concept of morality. This homosexuality, decriminalization of adultery is a new dimension because
considering the change of concept of morality and what is there in international level, what we see, what is the need of the time, what is the requirement of time. Mediation. In our legal system, in ancient system, Madhyastha had always been considered the best way to decide a case. Lord Krishna, when went to Kauravas, 5 गांव दे दीजिए. He was not a mediator. Because mediator has to be an impartial, independent person. He went there as a messenger. Oh, Pandavas, we will be satisfied if you give us a small part. Because the first characteristic of a Madhyastha is he should be impartial, an independent person. Totally independent person. In मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख और अलगू राय चौधरी की दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ा, फैसला उनके खिलाफ गया. तो वो जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियलिटी थी, पंच परमेश्वर, जैसे ये जो माना जाता था हमारे उसमें ऋग्वेद में कहा गया है अन्नु जनानान यतातः पंचम धीर. Matter will be referred to a committee of 5 persons who are noble persons, scholars, and know the Dharma Shastra for mediation. So this concept of mediation had always been there. In 1934, the Privy Council, a case was heard by a person. He said, "Sir, my case has been decided by the Gram Panchayat. Village Panchayat was conducted. They have decided this case against me. I went to the High Court. High Court dismissed my petition. Now I am before the Privy Council. I lost everything." His grievance was that when we conduct a proceeding in a panchayat, there is no evidence. Nobody records the evidence. There is no cross-examination. लेकिन प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जब पंच परमेश्वर होते हैं, गांव में इतने लोग बैठते हैं, वहां अन्याय हो ही नहीं सकता. See the concept of justice. An individual person can decide in a dishonest manner, but when a collective decision is taken, it will be according to law. They rejected it, saying, ग्राम पंचायत हिंदुस्तान में हमेशा से न्याय करती आई हैं और इस टेक्निकलिटीज में मत जाइए कि एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ. ये उनका बहुत दिनों से चला आ रहा है और चलता रहेगा. और इसमें बस एक ही बात है, जो पंच हों वो बहुत उच्च कोटि के होने चाहिए. महाराजा बनारस के यहाँ 16वीं शताब्दी में केस आया पार्टीशन का और वो उसको नहीं तय कर पाए, कोर्ट में मामला तय नहीं. तो कहा गया कि मध्यस्थता के लिए भी. अब मध्यस्थता कौन करे? जिसकी संपत्ति थी वो भी कोई बहुत बड़े आदमी रहे होंगे और इतनी बड़ी संपत्ति रही होगी जिसका बंटवारा महाराजा नहीं कर पाए. तो मैटर वाज रिफर्ड टू तुलसीदास. एंड तुलसीदास जी persuaded the parties to reach a compromise. He recorded the compromise in his own handwriting, and this is the order for mediation by Sant Tulsidas. What we talk today, our Indian judicial system, we have a judicial system in the ancient past which was much, much better than what we have today. We have somebody asked me to speak on jury system because we have lost it. Manu had suggested that there must be a king should be advised by assessors. But those assessors, Sabasad, should be a scholar of Dharma Shastra. Now, Yagyavalakya also said that Sabasad should be scholar of law. धर्म शास्त्र के ज्ञानी होने चाहिए.
जो कात्यायन साहब ने भी वही कहा, लेकिन जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट जूरी का, वो ये है कि जूरी का मेंबर लेमैन होना चाहिए, उसको कानून का कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है ये सबकी सबकॉन्शियस में रहता है, हमारे भी रहता है। हम गलत काम करते हैं तो हमको ये पता है कि काम गलत है, सबकॉन्शियस हमको बार बार वार्न करती है, जो तुम कर रहे हो ये गलत है, न्याय संगत नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो जो इंग्लिश जूरी सिस्टम है उनका ये था कि इवन ए लेमैन हैज ए कॉन्सेप्ट एंड ए सेंस ऑफ जस्टिस, देयरफॉर देयर मस्ट बी ओनली लेमैन। इंडिया में जो पहला ट्रायल हुआ जूरी का मॉडर्न टाइम में, वो 1665 में हुआ। एक अंग्रेज औरत ने इंडियन एक स्लेव लड़की रखी अपने घर में, उसका मर्डर कर दिया। ट्रायल के लिए जूरी बैठी, जूरी में 6 अंग्रेज थे, 6 पुर्तगीज थे, और उन्होंने उस औरत को कहा कि दोष मुक्त पाया। Then people protested that this is not न्याय, अन्याय। आपने अंग्रेज औरत को बचाने के लिए उसका फेवर किया। तो जूरी सिस्टम वाज चेंज्ड that it should be multiple members of the society, different society। और ये आया कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी तो हम लोग सब जानते हैं। 1641 में शाहजहां बादशाह, मुगल एम्परर बादशाह, ये शाहजहां की बेटी जहां बीमार हो गई, चल गई, उसका इलाज गैब्रियल ब्रूटन डॉक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने किया। उनको परमिशन मिल गई कि इंडिया के जितने पोर्ट्स मुगल राज्य के अंतर्गत आते हैं उन पे वो कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री जहाज ला सकते हैं, और उनका सामान चेक नहीं होता, वो क्या लाते, इम्यूनिटी। उससे उनको हथियार लाने का लाइसेंस मिल गया देश में, जो पहले नहीं ला सकते। ये बम्बई गांव था, 1534 में पुर्तगाल की सेना ने उसको हरा करके कब्जा कर लिया, सुल्तान को हरा के, और 1641 में वहां की राजकुमारी की शादी हुई इंग्लैंड के राजकुमार से, कैथरीन, प्रिंसेस कैथरीन वाज मैरिड टू किंग चार्ल्स, और ये बम्बई गांव उनको दहेज में दे दिया। अब अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल था, इतनी दूर क्या गांव है, कैसे राज करें। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि यहाँ ऑपरेट कर रही थी शाहजहां की उससे कृपा से, उसको लाइसेंस ग्रांट कर दिया। तो उसमें 2 क्लॉज बड़ी खराब रही। दे विल हैव ऑल पावर्स टू यूज फोर्स to defend the territory of boundary, and further if they acquire any other area they would be able to defend it also. Generally East India Company was a commercial company for trade, not meant for this kind of invasion and acquiring the territory, but this ये क्लोज से उनको पावर मिल गई और उससे बड़े। उसके बाद उन्होंने जूरी सिस्टम लागू किया। इंडिपेंडेंस के बाद भी जूरी सिस्टम लागू रहा, कुछ स्टेट्स में खत्म कर दिया, लेकिन बंबई में और कलकत्ता में जारी रहा। 1959 में आप लोगों ने सबने पिक्चर देखी होगी, रुस्ताम और ये केएम नानावती, बड़े मशहूर किस्से हैं। केएम नानावती वाले नेवल कमांडर who was arrested for killing the lover of his wife, Sylvia loved him, and he was put to trial. 9 में से 8 जूरी मेंबर्स ने नानावती को दोष मुक्त कर दिया। एक ने कहा कि नहीं, इसने किया, मर्डर किया। लेकिन जो सेशन जज था, he did not agree with the jury। हमारे वैदिक काल में किंग कुड नॉट अवॉइड सभासद, जय पत्र, कोर्ट की डिक्री जो होगी वो उनकी राय पे होगी। इवन प्रिवी काउंसिल
जो लंदन में बैठती थी और सब दुनिया के मुकदमे तय करती थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, वो जो राय देते थे वो किंग या क्वीन के ऊपर बाइंडिंग थी, दे कुड नॉट चेंज इट। उनकी लैंग्वेज जरूर होती थी, वी हम्बली एडवाइस योर मैजेस्टी टू दिस पास दिस ऑर्डर। इसमें क्योंकि उसको पावर नहीं थी सेशन जज को उसको वायलेट करने की, तो ही मेड ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कन्विक्टेड हिम and passed the order that jury should be abolished. In the meanwhile, Law Commission made a recommendation in 1915 in its 14th report that jury should be abolished, and in 1967 में लास्ट जूरी का केस हुआ कलकत्ता में, उसके बाद ये खत्म। Now the most important factor which affects us today, जिसकी वजह से आज रोज संसार में कुछ ना कुछ होता रहता है, that is a disturbance of ecological system, environment. ऋग्वेद में कहा गया है कि भाई आप हवा साफ रखिए, इसी से सब कुछ आपको स्वस्थ रहेंगे, अगर इसमें पोल्यूशन होगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हम लोग धरती को मां मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कौटिल्य शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी बहते पानी को मत रोकिए, नहीं तो फ्लड आ जाएगा कहीं पर। हमारे हिंदू धर्म में भी वर्शिप अर्थ, वाटर, एयर, लाइट एंड कॉस्मोस। वी कॉल आवर ट्रीज, वी वर्शिप काउज with reverence. Vedic texts provide that if a person pollutes well, ponds and tanks and destroys garden, he will go to hell. स्वर्ग नहीं मिलेगा। But if a person plants the tree prescribed in Vedic literature, he would not go to hell. So there is no guarantee that he will go to heaven. See how miser our scholars had been. Now we have experience. During Bharat Milap, Ramchandra ji asked Bharat, sufficient water for irrigation? Waters, the rivers are unpolluted? See how much they were concerned. ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी जब वो रामचंद्र जी समुद्र पार करना चाहते थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, माता सीता को लेने के लिए। तो समुद्र का रास्ता पार नहीं हो सकता था, तो लक्ष्मण ने कहा कि एक तीर मारिए, सारा पानी सूख जाएगा। रामचंद्र जी ने कहा पानी तो सूख जाएगा, लेकिन तुम ये कल्पना करो कि कितनी करोड़ मछलियां मरेंगी, जीव जंतु, इसमें जितना भी पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो आवर वैदिक लिटरेचर had been so much concerned with environment, but we polluted everything. Therefore we have this problem either of Joshi Mat or any Mat. Every day we have this entropy, this situation. आप लोग एक एक्सपीरियंस किया होगा कोविड में, लॉकडाउन हो गया, हम लोग घर में बंद हो गए, मजबूरी, स्वेच्छा से नहीं। बच्चों ने घर का खाना खाना शुरू कर दिया, बाहर नहीं जाते या बाहर से नहीं मंगाते, अब तो फैशन हो गया, खाते खाते की ऑर्डर आ जाता है। आपका वातावरण साफ हो गया, नेचर वाज क्लीन, यू कुड सी द क्लियर स्काई, यू कुड सी द स्टार शाइनिंग स्टार्स। जिनकी हमने कल्पना कर ली ये जीव जंतु समाप्त हो गए, एक्सटिंग्विश हो गए, इनकी जातियां लुप्त हो गई, गौरैया जैसी चिड़िया फिर प्रकट हो गई, बहुत सारे जीव जंतु दोबारा दिखने लगे। तो इससे एक सबक तो मिलता है, नेचर अपने आप को रिकवर कर लेगा और मनुष्य के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो वातावरण को हानि पहुंचाता। तो उसका एक सबक हमको लेना चाहिए लॉकडाउन के पीरियड का कि नेचर विल रिकवर आवरसेल्फ, वी शुड नॉट पोल्यूट इट। क्योंकि हमारे भरोसे नहीं है, हम उसके भरोसे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। नहीं वो देखिए, मैं तो वकील हूं, मौका मिलना चाहिए
जज पूछता है कब तक बोलेंगे साहब, जब तक आप सहमत ना हो जाए। अब मैं आपको बहुत कुछ नहीं कहूंगा, एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी बात है। चलिए, सब टैक्स का जो इम्पोजिशन होता है हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है अलग अलग तरीके से कि मधुमक्खी फूल से रस लेती लेकिन फूल को पता नहीं चलता। जस्ट लाइक ए लीच, ए काफ एंड ए बी, बछड़ा दूध पीता, गाय को पता नहीं चलता और आपके परिवार को भी पूरा दूध नहीं मिलता। इसी तरह से राजा को टैक्स उतना ही लेना चाहिए कि देने वाले को ज्यादा महसूस ना। कालिदास जी ने लिखा है रघुवंश में, जैसे सन ड्रॉज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ टू गिव इट बैक टू सेवरल थाउजेंड फोल्ड, उसी तरह से राजा को टैक्स लेना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में टैक्स की परसेंटेज भी बताई गई, कितने परसेंट लेना चाहिए। 1696 में इंग्लैंड में एक राजा हुए किंग विलियम III। He wanted to compete with King John and Henry, who were the author of this Magna Carta. उसने कहा पैसे की बहुत कमी है तो घरों में हाउस टैक्स लगाइए, और कितना टैक्स लगेगा, खिड़की के हिसाब से लगेगा, जितनी घरों में खिड़कियां हों उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। इंग्लैंड में सूरज निकलता नहीं, हवा बहुत चलती है, तो ठंड से भी बचना है, कभी सूरज निकले तो लाइट भी आ जाए, टैक्स ना देना पड़े, लोगों ने खिड़कियां बंद कर दी। वो टैक्स 1696 में लगा हुआ टैक्स 156 साल के बाद 1851 में बंद हुआ, बिकॉज पीपल डिक्लेयर्ड इट द टैक्स इज ऑन आवर हेल्थ एंड टैक्स इज ओनली लाइट एंड एयर। हमारे यहाँ जो लैंड टैक्स लगा, राजा टोडरमल, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर बादशाह, created zamindar as a intermediary. He collected the tax and paid it to the. But when the East India Company came, Lord Cornwallis introduced permanent settlement regulations 1793. It created a class of intermediaries like zamindars, talukdars, which exploited the tenant because they had to pay 91% of their collection to the East India Company and could retain only 9% as a collection charges. This 9% was not enough for them, therefore they exploited the tenants to the extent that they could not survive. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा जब क्रिमिनल ट्रायल होता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, मैं 2-4 दिन किस्से कहानी बता सकता हूँ आपको। क्रिमिनल ट्रायल में 2-3 चीज हम लोग सिखाते थे, डिफेंस काउंसिल अपने मुलजिम को बताते हैं कि तुमको कोर्ट में क्या बोलना है। जब सारी गवाही हो जाती है तो जज साहब उससे पूछते हैं तुम्हारे खिलाफ ये गवाही आई है, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा। तुमको रटवाया जाता है कि क्या कहना है, तुमको हर चीज मना करना है। हमने नहीं किया। ये क्यों झूठ बोला, इससे मेरी बड़ी पुरानी दुश्मनी है, ये अपनी साली की लड़की का रिश्ता मेरे लड़के से करवाना चाहता था, मैंने नहीं दिया, इसलिए नाराज, झूठी गवाही दे रहा है। कुछ चीजें होती हैं एलिबाई, उसमें क्या होता है कि मेरे ऊपर बनारस में मैंने कोई अपराध किया, मैं कहूंगा मैं तो उस दिन था ही नहीं, दिल्ली में था। अरे भाई दिल्ली आजकल तो हवाई जहाज चलते हैं, दिल्ली से आकर के भी मर्डर करके दिल्ली वापस चले गए, हो गए 4 का बाद तुम दिल्ली से जरूर ले आए, दिल्ली में था। उसमें एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, लॉ डज नॉट प्रिज्यूम ए पर्सन टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। और ये 4-5 चीज हर क्रिमिनल ट्रायल में सिखाई जाती है और वकील लोग इस पर बड़ा ध्यान देते हैं। और जज साहब की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कोई बात उसको वकील को नहीं कही, भाई बताई नहीं उसके खिलाफ क्या है, तो आप उसको उसके आधार पर उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं भी 50 साल से इसका विद्यार्थी हूँ, कि कम से कम 10% केसेज में 1913 का बयान ठीक से दर्ज है। हर वकील लर्निंग लॉयर है, हर जज ऑनरेबल जज है,
लेकिन हमको पता नहीं कि 313 का बयान कैसे था। तो हम किस बात के लर्निंग और किस बात के उम्र। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के लिए गई माता यशोदा के पास, तेरा लल्ला चोर है, मक्खन चुराया, पकड़ा गया, मुंह पे मक्खन लगा हुआ। माता यशोदा ने सारे सवाल पूछ लिए 313। अब सूरदास का जवाब देखिए। सूरदास के बारे में कहा जाता है, he did not have the vision by birth। उसने हमारी तरह कोई LLB, LLM, PhD की डिग्री नहीं दी, किसी स्कूल में नहीं गए। But see the sense of justice and concept and the doctrine he has developed। मैया मोरी में नहीं माखन खाया, complete denial, I have not committed the offense, nothing doing। कैसे? तुम्हारी डिफेंस क्या है? भोर भय गैयन के पाछे मधुबन वाय उठाए, 4 पहर बंसी बट भटको सांझ पड़ेगा। एलिबी मैं तो हो ही नहीं सकता यहाँ। सवेरे तुम मेरे को गाय लेके भेज देती हो, जाओ, और मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा दी, तेरी गाय चरा के लाया, और अभी आरोप सुनो, ये तो संभव नहीं है। एलिबी फिर कहता है, मैं बालक वैहन को छोटो, किस भी नीची को जाए। Doctrine of impossibility। It is impossible to commit the offense because my hand can't reach there। Lord does not presume a person to do something impossible। वाल वाल सब पैर पर से बरबस मुख लगता। ये जो एविडेंस है, जो गवाही है, मेरे मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, तो ये सब मेरे दुश्मन है, क्या है, झूठी गवाही दे रहे हैं। माता यशोदा reject all defenses, nothing doing, you are committed। हमारे यहाँ एक होता है कि जज शुड नॉट बी पास्ड, और जब हमको लगता है कि जज अपने खिलाफ जा रहा है तो हम एक एप्लीकेशन दिलवा देते हैं हाई कोर्ट में, जब दूसरी पार्टी से मिला हुआ केस ट्रांसफर करो। जब सूरदास जी ने देखा कि माता यशोदा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और डिफेंस आर रिजेक्टेड, ये सेज जिया तेरे कुछ भेद ऊपरी है, जानी पराय हो जाए। तुम तो बास्ट एंड प्रिजुडिस हो चुके, तुमको पता तुमने मुझे जन्म दिया ही नहीं, तुम बास्ट हो, यू कांट डिसाइड माय केस, ट्रांसफर इट टू सम। व्हाट आई वांट टू से, हम लोग स्कॉलर नहीं हैं, हम लोग विद्यार्थी जरूर हैं, वी आर नॉट एजुकेटेड। व्हाट वी हैव गॉट इन आवर एजुकेशन, we only collected information। To get education, we have to be learned, we have to learn how to lead a life, and it is rightly said that old is gold। तुलसीदास, ये सूरदास जी का उदाहरण में इसलिए दे रहा है कि आज भी कोई पढ़ा लिखा, ये अंग्रेजों ने तो बाद में कॉन्सेप्ट लिया, मुझे तो डाउट है, वो मैं रिसर्च करना चाहता था, टाइम नहीं मिला, कि अंग्रेजों ने भी 313 बयान यही देख के लिखा होगा। So Sanskrit is known as a mother of so many languages। This literature is a source of law, not only modern law but also future law। We must learn it, we must educate our people to learn more and more so that the society may be benefited। I again thank the organizers for giving me the opportunity। कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो सन, धन्य सभासद हो न्यूमेरस कैपेसिटी। एक बार मुझे याद है, किसी प्रशासनिक अनुशासनिक मुद्दे पर सबसे चर्चा हो रही थी, तो सबने कहा कि मैं जहां पर हर जगह हथौड़े की जरूरत नहीं होती है, कहीं कहीं सर्जरी से भी काम करना पड़ता है ताकि कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हो सके। तो मुझे याद आया, सर भारत वर्ष के एक रिनाउंड सर्जन भी हैं और हमारे कुलगुरु हैं। सर आपसे निवेदन है कि हमें आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर मयंक। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैदिक विधि शास्त्र एवं समकालीन विश्व पर इसका प्रभाव विषय 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में के मुख्य अतिथि एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश डॉक्टर BS चौहान जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के विशिष्ट अतिथि आदरणीय सदगुरु श्री माधवप्रियादास जी, स्वामी जी श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम
गुजरात का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शांति श्री पंडित कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर स्वास्ति भट्टाचार्य का भी अभिनंदन करता हूँ। वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी का इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों एवं सम्मेलन में बात कर रहे सभी अतिथियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय न्यायाधीश चौहान साहब का, इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले बोलता है वो सब कुछ बोल जाता है, जो बाद में बोलता है उसके लिए कुछ बचता नहीं, तो हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो मैं कुछ 2-4 पॉइंट्स जो लोगों ने कहा वही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैडम को जाना भी है। त्रिपाठी जी ने कहा कि वैदिक विज्ञान और विधि शास्त्र के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की, उन्होंने बताया, और मेरा ख्याल है उसको पूरा किया माननीय चौहान साहब ने। उन्होंने जो उदाहरण दिए महाभारत से और गीता से और भी हमारे वैदिक ग्रंथों से, तो इसमें कोई दो राय नहीं। स्वास्थ्य जी ने 2 मुख्य बातें कही कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, और बाद में उन्होंने जो कंक्लूड किया simple living and high thinking, that concludes the whole story about the religion and spirituality. And she also mentioned that religion is a powerful tool. स्वामी सदगुरु जी ने काफी विस्तार से चीजों को बताया। उन्होंने अपनी शुरुआत काशी की महिमा से की, और ये मेरा ख्याल है लाजमी था, क्योंकि आपने 7 साल यहाँ काशी में बिताए हैं और आपका जो लगाव काशी से है वो काफी गहरा है। और इसीलिए जब भी हम चाहते हैं, जब भी आपके आशीर्वाद की जरूरत होती है, आप पधारते हैं और हम लोगों को अनुग्रहित करते हैं। आपने 2 चीजें कही कि विचार जड़ है और धर्म जो है वो वृक्ष है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी के साथ आपने ये भी कहा कि गुरुकुल में तप एवं संयम होना चाहिए, इसी पे आधारित है सारी गुरुकुल की शिक्षा। आपने ये भी कहा कि धर्मशास्त्र का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसका एग्जाम्पल आपने ये भी दिया कि सभी चीजें तो समयबद्ध होती हैं, लेकिन एक मनुष्य है वो समयबद्ध नहीं होता है। और ये बहुत ही आपने उसकी बात की कि आदमी को समयबद्ध होना चाहिए। आजकल की जितनी परेशानियां हैं, आप चिकित्सक हैं तो थोड़ी बातें मैं उसके बारे में कह दूंगा कि जो भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि आदमी समयबद्ध नहीं है, उसने अपनी सारी रूटीन बदल दी है, उसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई हैं और बदल गई हैं। प्रोफेसर पंडित ने काफी अच्छी चीजें बताई। उन्होंने ये बताया कि पैराडाइम शिफ्ट की जो बात की, और 2014 के पहले और 2014 के बाद में, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग में से जो 2014 के पहले बाहर गए हों या 2014 के बाद बाहर गए हैं, आप खुद ही इसको एसेस कर सकते हैं कि हम क्या थे और अब क्या है। आज हमारी क्या हैसियत है विश्व पटल पे, और 2014 के पहले क्या थी। फिर आपने कॉलोनियल्स की बात की, इंटेलेक्चुअल्स की बात की। यहाँ पे मुझे याद आता है चोला डायनेस्टी की आपने बात की और डेमोक्रेसी की बात की। और जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी उनको वहाँ ले गए थे, वहाँ उन्होंने चोला डायनेस्टी की बात की थी और बताया था कि हमारी और साउथ ईस्ट एशिया की कितनी पुरानी वो दोस्ती रही है कि सारा व्यापार जो आपने कहा वो वहाँ से होता था और चाइनीज आते थे, यहाँ से चीजें लेके जाते थे। तो बिल्कुल सही कहा आपने। फिर आपने ये कहा कि वी बिलीव इन आधार भी हमारी एक्चुअली शक्ति रही है, और ये अंग्रेजों के आने के बाद से चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से हम आज इस हालत में पहुंचे थे। बट हमको लगता है कि स्वामी जी जैसे लोग जिस तरह राह दिखा रहे हैं, हम उसको वापस पा लेंगे। फिर आपने कहा था कि आपने हिंदुइज्म के बारे में भी कहा कि इट इज द लाइफ स्टाइल। और प्रोफेसर चौहान साहब ने तो इतने विस्तार में बताया और उन्होंने सभी ग्रंथों से कुछ ना कुछ दिया, और कुछ चीजें तो हमको भी शायद पहले नहीं पता थी। हम आज काफी कुछ शिक्षा मिली हमको भी कि देखिए कैसे चीजों की उत्पत्ति होती है। लोग कहते हैं कि विधि शास्त्र के बारे में हमारे वेदों में और शास्त्रों में कितना पुराना है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि वो जो सर कहते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं सर, स्लेव आई रिमेन,
वो है सर जो हम कहते हैं, जो अंग्रेजों ने दिया है और हम उसको फॉलो करते हैं। जबकि ये सर फ्रेंच वर्ड है SIRE, ये फ्रेंच वर्ड है वो जो किसी इंपॉर्टेंट आदमी को ऑनर करने के लिए जिसका वो नाम नहीं जानते थे वहां पे वो कहा जाता था। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि उन्होंने हमको श्रेय भी बना के रखा। हमने अपनी सारी पुरानी चीजें, हमने अपनी गुरुकुल प्रथा छोड़ दी। मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने इसको जीवंत रखा है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल सपोर्ट चाहिए कि अगर भारत का भविष्य और जो हम विश्व गुरु की बात हमारे प्रधानमंत्री जो हम सभी करते हैं वो तभी मुमकिन है जब हम गुरुकुल परंपरा को वापस ले आएंगे, तभी हमारी चीजें वापस आएंगी। इसी के साथ जैसे हमने कहा, और वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का मकसद भी यही था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसमें अग्रणी हो और वो हमारे वेदों से जो हमारी पुरानी चीजें हैं, चाहे वो विधि की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे वो व्यापार की हो, सब उससे निकालें और हमें पुनः अपना एक क्रिएट करें सारी चीजें, तभी हम आगे जाके विश्वगुरु बन सकते हैं। और जैसा कि कहा गया कि संस्कृत ही हमारी हर भाषा की जननी है। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, जहाँ साहब हमसे एग्री करेंगे, कि आजकल यूरोपियन कंट्रीज में सब हम यहाँ वंदे मातरम प्रेयर नहीं कर सकते, वहाँ वंदे मातरम की प्रेयर होती है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हमारी थी वो वहाँ प्रैक्टिस हो रही है, जो उनकी वहाँ थी जो वो छोड़ रहे हैं वो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह से लोग जागरूक हुए हैं, ये जल्द ही चीजें लाइन पे आएंगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि सारी चीजें बदल रही हैं। हम इकोनॉमी में तीसरे और 5वें नंबर पे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो सोलर का हो, सोलर एनर्जी में हम सेकंड और थर्ड हैं। तो ऑटोमोबाइल्स का हम जर्मनी को पीछे छोड़ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उस लाइन पे चले हैं और जैसे जैसे हम अपनी पुरानी चीजों को वापस ले आएंगे हम विश्वगुरु बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे उपस्थित हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने समय निकाला और अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। और मैं उपेंद्र भाटी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय पे चर्चा का आयोजन किया, मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं श्री रामाश्रय तिवारी जी से भी निवेदन करूंगा कि अगर यहाँ है तो कृपया मंच पर आ जाएं, जिन्होंने वैदिक आचार शास्त्र पुस्तक लिखी है जिसको यहाँ रिलीज किया जा रहा है, और साथ में वैदिक ट्रेडिशन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। Kindly release the Swami. The next one. This book is a publication of Center for Vedic Sciences, VHU, and now it is time to release the Vedic Achar Shastra. अब मैं निवेदन करूंगा इस केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी सर से कि हमारे अतिथिगणों का अंगवस्त्रम और मोमेंटो लेकर के
Between our tradition and modernity, and therefore, friends, like this is a kind of kumbh and yajna where the scholar of modern law and the scholar of traditions existed and discussed and come out with certain conclusions. Swamiji, you are our guide, and your presence, grace, and words are blessing for us. We are also thankful to Honorable Vice Chancellor Shanti Sarup Dhuli Pandit Madam present in this, and thought-provoking views of Madam also provides a path for future study and future discourse. I am also thankful our distinguished scholar of this inaugural session, Swasti Bhattacharyya, spoke something about on the religion, ethics and morality, and highlights the importance of morality in the modern and contemporary world. I am also very, very thankful to Dr. Justice B.S. Chauhan, sir. Your presence is a presence of institutions. You already chaired the Law Commission of India, and your words enlighten us and highlights our cultural heritage, thoughts and contemporary relevance of that. I am also thankful for the presidential address, the Honorable Rector of BANARAS Hindu University, Professor V.K. Shukla, sir. Your blessing and your presence is a presence of university with us. Friends, we are also thankful to Coordinator Upendra Tripathi, sir. Upendra Tripathi, sir, provides me opportunity to discuss law with Veda, law with Dharmasastra, and law with our culture. Friends, entire law is colonial law, and this should be changed, this should be replaced, or this should be transformed. And for the purpose of transform, the philosophical discourse is going on in the school, and the entire facility and entire process is originated under the guidance of Professor Tripathi, and therefore I am thankful, sir. In this August gathering, we very distinguished guest presence here, Honorable Justice Partner, Justice Shree and Brahma scholar from Sri Lanka, Tripathi, Ramnath Jha, sir, Swami, sir,
Swaminarayan sir, Hridaranjan Sarma sir, other Dean Faculty of SVDV, Professor D.P. Verma from Law Commission, the entire team of Law Commission, the number of students participating from the various places of the India and abroad. I'm thankful for all. My just and the final information to all participants, friends, we already mentioned the rule, kindly present in the session if you want to get your certificate. Because this is the hectic schedules and we manage the presence of the intellectual person in this conference. Kindly attend and maintain your attendance during the conference. The attendance process will also be there, friends. Friends, I am thankful for participants. I am also thankful for our volunteers. They work hard for this conference, friends. Thank you very much. Thank you for the event.